Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. It's a video session on daily news and editorial analysis dated 16th of October. Through this video session, I'll make you understand some of the important news and editorial relevant for the Civil Services examination. The coverage of this session include both the Hindu and Indian Express. Now, before we begin, आप में से जो स्टूडेंट एस्पिरेंट सिविल सर्विसेज 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सवाल के प्रैक्टिस करें. वी एट एप्टी प्लस आर प्रोवाइडिंग यू फ्री प्लेटफॉर्म ऑल्सो, जहाँ पे आप कई MCQs के सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड इवन एट द एंड ऑफ दिस सेशन देयर आर 2 MCQ क्वेश्चन दैट विल डेफिनेटली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द अपकमिंग prelims examination. If you're looking forward for dedicated test series program, we have brought a dedicated program that is निश्चय. ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको 4900 प्लस क्वेश्चंस along with that वीडियो डिस्कशंस, डेमो टेस्ट और फ्री मैगजीन मिलेगी फॉर कंटेंट एनरिचमेंट. फॉर मोर डिटेल्स यू कैन रेफर टू आवर वेबसाइट, और आप इंस्टेंटली रजिस्टर करना चाहें तो QR कोड यूज करके भी आप रजिस्टर कर पाएंगे. Now let's get started with the discussion and give you the highlights कि आज के डिस्कशन में हम क्या डिस्कस करने वाले. The first news talks about the center. They are willing forward with the increasing the retirement age for the scientists to 65. The second important news is about the UN approval for Kenya-led security mission to Hathi. The third important news talks about the UAB and estimate for the 3 services. The second last news talk about the मनरेगा allocations जो कि increase की गई है, almost 95% की consumption हो चुकी है. And we'll conclude the session with editorial that talks about how importance is water and how the conservation is essentially the need of the hour. So these are the important news that I'll be discussing with you in detail. So let's get started one by one. So the first important news talks about center likely to raise the retirement age of the scientists. So Ministry of Science and Technology ने proposal raise किया है that they will be coming up with a plan जहाँ scientists की जो retirement age है वो 65 की जाएगी. As of now, the current age of retirement is 60. तो अभी current age है 60, जो गवर्नमेंट बढ़ा करके 62 भी किया, और कुछ सेक्टर्स में बेसिकली ICR और कुछ सेक्टर जहाँ पे 62 है, बट मेजॉरिटी 60. नाउ द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड कि उसे वो 65 ईयर्स करेगी फॉर स्पेसिफिकली द साइंटिस्ट कम्युनिटी. Now, some more details. What is a proposal that is coming for the retirement? This is the concerned ministry. और concerned ministry की बात करें, Ministry of Science and Technology is a concerned ministry जिन्होंने एक proposal सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है for the proposal of enhancement of retirement age for the scientists working in an autonomous body of the department and various ministry that they work. Right? इस नोट में 14 autonomous bodies जो कि funded है Department of Science and Technology. See, Department of Science and Technology की बात करें, DST, they are actually funding the institutions, right? उसके साथ साथ जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके बारे में फाइनल अप्रूवल मांगी गई है, और क्या फिनेंशियल बर्डन पड़ेंगे गवर्नमेंट को उसकी भी जानकारी इस प्रपोजल के थ्रू मांगी गई है. द साइंटिस्ट हु वर्किंग फॉर द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज आर ऑल्सो लाइकली टू कम अंडर द एम्बिट ऑफ द प्रपोजल. सो इट इज नॉट ओनली दैट द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक इज ओनली देयर, राइट, SNT, बट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के भी जो डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट हैं उनको भी इसमें कंसिडर किया जाएगा फॉर देयर रिटायरमेंट इंक्रीज. नाउ करंट रिटायरमेंट एज की अगर बात करें, एट प्रेजेंट द डिफरेंट विंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अकॉर्डिंगली वर्किंग, बट जो ज़्यादातर डिपार्टमेंट है 60 ईयर इज द एज ऑफ रिटायरमेंट, राइट. ना फॉर ICAR और ICMR की बात करें, ये 2 डिपार्टमेंट ऐसी है जहाँ पे रिटायरमेंट एज इज 62, राइट. Now, if it is increased by 65 after the approval of the central government consent, finally सारे department लिए 65 की जाएगी, right? The larger proposals tend to find the top senior scientists who are working for the universities, Indian Institute of Technology, their retirement age is 65. तो अभी भी कुछ ऐसे institutions हैं जहाँ पे 65 है, but majority of the scientists will be getting 65 year as a age of retirement. It is again important because इंडिया जैसा कंट्री में वेयर द ह्यूज पोटेंशियल आर एक्चुअली वर्किंग, वहाँ पे इस तरह से रिटायरमेंट एज बढ़ाना एक काफ़ी सिग्निफिकेंट मूव है गवर्नमेंट के ऊपर. ना कुछ और कंट्रीज के एग्जांपल को अगर देखें, आई मीन व्हाट आर देयर रिटायरमेंट एज एंड हाउ दिस, देखो एवरेज नंबर्स ऑफ ईयर स्पेंड ऑन द रिटायरमेंट. दिस गोज फॉर फ्रांस, देन वी हैव स्पेन, इटली, जर्मनी, UK,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेक्सिको और साउथ कोरिया। दिस इज फॉर मेल एंड फीमेल। तो एवरेज टाइम जो स्पेंड किए जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, हु स्पेंड द लॉन्गेस्ट टाइम इन द रिटायरमेंट। Now, retaining talent की गवर्नमेंट ने बात की है। हाउ? बिकॉज द रिटायरमेंट एज विच इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 60 to 65 will ultimately call for retaining the talent, right? To move towards fights against the top scientists, which is actually working in the Ministry of Science. 14 ऐसे बॉडीज, ऑटोनोमस बॉडीज हैं गवर्नमेंट की जो कि वर्क कर रही है साइंस एंड इनोवेशंस को लेकर के। एंड द अदर एम is to maintain the part and aim to bring the gender parity also and bring parity among the members who are working for the betterment of science and technology and development of the nation. Now, moving ahead with other news, UN approved Kenya-led security mission to Haiti. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने UNSC रिसेंटली उन्होंने अप्रूव किया है इंटरनेशनल फॉरेन सिक्योरिटी मिशंस लेड बाय केनिया। सो द केनिया नेम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपसे ये पूछा जा सकता है कौन से कंट्री को एक्चुअल में इसकी जिम्मेवारी दी गई है। एंड द केनिया कंट्री विल बी लुकिंग फॉर रिजॉल्विंग द पार्ट ऑफ पीस and giving the protest which is ongoing and escalating the violence that is there between the Haiti community. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज है उस रीजन में जहाँ पे जो डोमिनेंस है, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं एंड दे आर नॉट अबाइडिंग रूल ऑफ द कंट्री, राइट। नाउ द अदर डिटेल्स अगर बात करें कुछ टाइम पहले की, Haiti has actually approached the country. Haiti is a country. They have approached for the forces so that they can come up with a deadly gang that is operating. वहाँ पे गैंग वॉर काफ़ी कॉमन है एंड दीज गैंग वॉर हैज़ किल्ड अ लॉट मेनी पीपल, राइट। तो गैंग वॉर की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट है एंड इवन द डेमोक्रेटिक सेटअप इज़ नॉट प्रॉपरली फंक्शनल. सो Haiti has experienced a surge in the violence in the past year जहाँ पे कुछ armed group, these armed group are actually functioning in the capital that is Port-au-Prince. Now, this result in the killing of almost 2,800 people, almost close to 3,000 people की death हुई है and 80 minors were including injured. और जून में ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ी है. UN पीस कीपिंग मिशंस की अगर बात करें, दिस हैज़ एक्चुअली एंडेड इन 2017. उसके बाद से जो वहाँ पे गैंग ग्रुप्स हैं या जो गैंग वायलेंस है उसमें और ज़्यादा इंक्रीज देखी गई. Now, this is a map which will help you understand the real situation which is going on the region. ये आप देख सकते हैं, this is the capital, this is the old terminal. कुछ important groups जो वहाँ पे functional है, that is G-Prep, G9 coalitions and other. These are the main territories upon the surrounding areas, right? तो ये कुछ gangs हैं, small and multiple gangs that are operating in the region. Now, objective क्या है इस मिशन की जो कि UN ने actually केनिया को दी है? Apart from other countries, the country like Bahamas, Jamaica, Antigua and Barbados, they are also offering their support to Haiti, right? और हैती के सपोर्ट के बाद वहाँ पे जो उनकी नेशनल पुलिस है उनको सपोर्ट की जाएगी. द पुलिस विल बी प्रोवाइडेड सपोर्ट बाय द अदर फोर्सेस एंड दे विल इंश्योर कि वो एक कैपेसिटी बिल्डिंग को डेवलप करें, इम्प्रूव सिक्योरिटी कंडीशंस and secure ports, airport and other critical intersections, right? And this resolution will help the authority to make arrest and coordinations. This will include that they will empower the Haitian police, right? और intention ये है कि जो countries में elections भी होनी है उसको पूरी तरह से, I mean, with the democratic setup, it should be actually executed. Now, क्या reason है इस तरह के mission की और क्यों ये ज़रूरत आन पड़ी है इस समय? The UNSC has approved the international missions because they have actually recognized कि इस टाइम पे ये ज़रूरी है कि UN forces या फिर जो जितने foreign assistance forces हैं वो intervene करें इस matter पे. And even the Prime Minister of Haiti has actually come up with this support mechanism. उन्होंने request की, they have actually requested the international community to come and intervene. UNICEF के report को अगर देखें, they have said that 3/4 the country has been struggling with the major hospital problems. The basic amenities are not there, people are dying, and in that blockage US ने अपनी categorically statement में ये confirm किया है कि वो troops नहीं भेजेंगे but जो medical assistance हैं वो भेजेंगे. उसके साथ साथ $100 million की support है in intelligence, communications, operational and medical aid. Now, moving ahead with other news, that is study for the recommendations for the UAV study undertake की गई है ट्राई फोर्सेस की तरफ से, जिन्होंने बताया MQ-9B स्काई गार्डियन जो UAV है वो एक्चुअल में उसकी प्रोक्योरमेंट की ज़रूरत है फॉर ऑल द 3 फोर्सेस दैट इज ऑपरेटिंग, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी.
So क्या recommendations आई है study के? The study has recommended that 31 MQ9B high altitude UAV will be there and 155 medium altitude UAV will be inducted in the three forces which include Indian Air Force, Indian Navy and Indian Army, right? It has recommended this much are part of the UAV will be inducted, and the study is meant to optimize the platform required for resources to avoid duplications. Now, these are the details, basic details about the MQ9B. कई बार एग्जाम्स में आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं. The cross weight of 5670 even for student who are appearing for अगर आप CAPF एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन एस्पिरेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, राइट. इट हैज़ अ क्रू दैट इज 2 पायलट इन ग्राउंड. वेपन्स की अगर बात करें लेजर गाइडेड मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल एंड एंटी शिप मिसाइल्स हैं. मिशंस में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन, ये सारे मिसाइल्स हैं. Missions में it can go for search and rescue, law enforcement, border enforcement, defense counter and airborne early warning system. So these are the part of MQ9B Predator drones. And moving ahead with other news, that is centered to allocate additional fund for मनरेगा. मनरेगा के लिए additional fund सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है. दिस इज 30,000 करोड़ to 40,000 करोड़ रुपीस फॉर द मनरेगा फ्लैगशिप, और ये फिनेंशियल ईयर 24 के लिए की गई है, विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज टॉक्ड दैट 95% जो बजट एलोकेट की गई थी वो यूटिलाइज कर ली गई है in many states, right? Now coming to the details of budget allocations, total amount that was allocated was 60,000 crore rupees, जो कि 18% लोअर है पिछले साल के मुकाबले. अगर देखें बजट एलोकेशंस की, जहाँ पे 73,000 करोड़ रुपीस एक्चुअली एलोकेट की गई, इस बार सिर्फ 60,000 करोड़ रुपीस ही एलोकेट की गई, विच इज़ 18% लेस. इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रेज हुई है. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अपने स्टैटिक्स में बताया दैट दे आर रनिंग आउट द फंड और 95% ऑफ द फंड हैज़ बीन यूटिलाइज. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की बात करें, दे आर रनिंग विद अ डेफिसिट ऑफ 6,146.93 करोड़ रुपीस. नाउ कुछ और स्टेट्स की बात करें जहां फंड्स की शॉर्टफॉल है एंड दे हैव एक्चुअली रेज द कंसर्न. दिस इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला. So these states are running with the deficiency of the total amount allocated to them. Now मनरेगा की बेसिक्स की अगर बात करें, the मनरेगा is a program which provide the work guarantee program. वर्ल्ड में एक सबसे बड़ी इस तरह के प्रोग्राम है जहाँ पे वर्क गारंटी दी जाती है, राइट. एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट, टू ऐसे अडल्ट मेंबर को जो कि किसी भी तरह से स्किल्ड ना हो और मैनुअल वर्किंग करने के लिए कैपेबल हो. Now the wages in the Manrega is paid according to the Minimum Wages Act of 1948, and the scheme for at least 1/3 of the beneficiaries should be women. So these are the provisions which is there under the scheme. Now moving ahead with the editorial for the day that talks about the world need to stop taking the water for the granted. अगर बात करें water की, we know how important it is and how significant role it plays in our daily life, in our various industrial activities and so on henceforth, right? तो उसको लेकर के बात की गई है इस एडिटोरियल में, कंसर्न रेज किए गए दैट हाउ वी नीड टू वर्क आउट. व्हाट आई बी डिस्कसिंग, फर्स्ट इनोवेशन एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच की बात करेंगे. वाटर एंड क्रॉप प्रोडक्शंस, इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज में, क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशंस कैसे होनी चाहिए एंड द वे फॉरवर्ड. नाउ इस बार की वाटर बात करें अगर वर्ल्ड फूड डे की, इसकी जो टाइटल थीम है दैट इज वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड. वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड on 16th of October every year, that is today, and this theme called for an urgent action in managing the water wisely, right? Availability of lack of water has become even more critical for increasing the climate extremes. Water availability की अगर बात करें, इस aspects to the human life, especially food nutrition और security में काफ़ी हद तक इनकी एक important और significant role है. Now innovation and collaborations की अगर बात करें, in less than 7 years that we have left with to achieve the SDG target, अगर sustainable development goal हमें achieve करनी है by 2030 and only we are left with 7 more years, right? तो इस चीज़ को achieve करने के लिए जो Food and Agriculture Organization है FAO, उसके अलावे जो International Fund for Agriculture Development and we have WFP, that is World Food Program, ये तीनों एजेंसीज ने अपनी ज़रूरतें बताई हैं एंड दे हैव सेड दैट वी नीड टू हैव अ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू इंश्योर फॉर द मैनेजमेंट,
conservation and availability of water scarce resources. वाटर एंड क्रॉप प्रोडक्शंस की अगर बात करें इंडिया में स्पेसिफिकली अबाउट 60%, दिस इज द डेटा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपके मेंस के लिए भी, इस तरह के पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होंगे. सो 60% ऑफ द नेट शोन एरिया इज रेन फेड इन इंडिया, राइट, कंट्रीब्यूटिंग टू द 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्शंस. और 40% प्लानट में अगर देखें, प्लानट टोटल लैंड इज डिग्रेडेड, लीविंग फार्मर विद लेस प्रोडक्टिव लैंड. तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, affecting the agriculture productivity, changing the agriculture and ecological conditions, and shifting the part of the climate change and even the seasonal pattern that is there. So change in the rainfall has also impacted the higher temperature and the productivity, reducing the food availability. See, अगर climate pattern अगर change होगी तो उसके repercussions multiple होंगे and it will be multi-dimensional. तो ऐसा नहीं है कि आप एक पिन पॉइंटेड उसके रीजंस बता पाएंगे, उसकी जो डायमेंशन है, उसके जो दायरे हैं, उसकी जो इम्पैक्ट है, दैट इज ह्यूज. नाउ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशंस की जरूरत है फॉर द क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम. इट सपोर्ट दैट फार्मर्स शुड बी देयर फॉर द स्कूल प्रोग्राम इन उत्तर प्रदेश, और स्मॉल फार्मर को भी यहाँ पे जानकारी दी जा रही है यूपी स्टेट्स में, सो दैट दे आर एक्चुअली डिवाइजिंग आउट सम पॉलिसीज. आंध्र प्रदेश के फार्मर्स को बताई गई है कि किस तरह से ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करना है ताकि 638 हैबिटेशंस जो है, जो ड्राउट प्रोन एरियाज हैं, उनमें वो हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स के थ्रू काम कर पाएंगे, राइट. नाउ द अदर डिटेल्स इज अबाउट हाउ क्लाइमेट चेंज हैज़ इम्पैक्ट और किसके क्या क्या रिपरकशन है. हायर क्लाइमेट हैज़ मोर इवापोरेशन इन द लैंड और सी इन टू द एटमोसफेयर, इट गेट एयर वार्मर्स, वाटर वेपर में होती है, और उसके बाद खास करके इट कैन लीड टू मोर इंटेंस द पार्ट ऑफ रेन स्टॉर्म. इंटेंस रेन स्टॉर्म इंक्रीज टू द रिस्क ऑफ फ्लडिंग, which again cause problem, and this is something which combined with the temperature increase and risk of the drought. Now, how to conclude the part of the article? See, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, urgent need है that climate change might be promoted with the technology's upgradation. See, technology and innovation can only be another way out, right? तो rainfall productions में जो resilient और sustainable agriculture की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, sustainable water management की तरफ, no, not only the government but also the stakeholders like farmers and other people need to work out to ensure that they are actually working toward foods and nutritional security threats. And to achieve the global nutrition, political commitment is needed as much as concrete investment. तो ये सारी चीज़ें ज़रूरतें हैं, then only we can achieve the target and utilize the water with its full potential. Now moving ahead with the answers discussion, Saturday जो कोई सवाल हैं उसके correct options और discussions. For first, the correct option is B. मैंने आपके हिक्यूपी के ट्राइब के बारे में पूछा था, इसके फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब. सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देयर मदर टंग इज रेफर्ड एज कोट वग्रियर कोट्स. थर्ड इज लाइक करेक्ट, हिक्यूपी के ट्राइब हैज बीन फॉलोइंग द हिंदू ट्रेडिशन, पार्टिसिपेट इन द हिंदू फेस्टिवल. जो सेकंड क्वेश्चन है उसके ऑप्शन सी है, that is John Ferros, a Norwegian author, has been awarded with a Nobel Prize. And second statement is also correct, that his exploration theme is related to human condition, absurdity to the fluidity of life, and power with the human emotions. Now today MCQ for the day जो आपको एक्चुअल में पार्टिसिपेट करनी है और उसके करेक्ट आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताने. The first question is about the United Nations Climate Action Summit. It aims to accelerate the climate with the prudence of 28 conference of parties, China, US, and India were the active participant. This summit has updated the goal to achieve net zero emissions. So what you have to do, you have to choose A, B, C or D as a correct option and write that in the comment section down below. अपने आंसर आप comment section में ज़रूर बताएं. Second question of the day is about the galactic tide. Tide is felt object and result in the galaxy the gravitational field, its ability to modify the structure and disturb the part of small system, right? Smaller star system उनको disturb करती है. तो check करें अपने correct answers को and do write and participate in the comment section down below. So this was all about for the daily news and editorial analysis. I wish you all the best. आप अच्छी तरह से prepare करें. Give your best possible efforts. अगर आपको किसी भी तरह से हमारी help की ज़रूरत है, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching. Thank you for staying connected.